network issues. Okay. Okay. So this is the next point in your syllabus, that is cell division and its significance. In previous lectures, we have discussed about the cell organelles. In which cell organelles are you studied? So mitochondria, then peroxisomes, glycosomes, and ribosomes. These cell organelles are you studied. So next point in your syllabus, that is the cell division and its significance. So what is mean by cell division? So cell division, that means formation of the new cells. So here in the cells they never form the new सेल्स न्यू फॉर्म नहीं होते. एक सेल्स का जो पैरेंटल सेल्स है, पैरेंटल सेल्स का डिवीजन होके उससे ही फिर दो नए सेल्स फॉर्म होते हैं. बल्कि जैसे हमने अदर सेल ऑर्गेनेलिस देखी कि न्यू सेल ऑर्गेनेलिस फॉर्म होते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं होते. जो पहले से वहाँ पे सेल्स है, सेल्स का डिवाइडेशन, जो पैरेंटल सेल है, पैरेंटल सेल्स का डिवीजन होके नए सेल्स वहाँ पे फॉर्म होते. तो these mode of cell division in all organisms will be same. So कौन सा भी हम प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ले, सेल डिवीजन जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस विल बी सिमिलर. Then these all living organisms start their life from the one or the single cell. जो भी सेल साइकिल है in living organism, they will be start their life cycle from the one cell. one cells का डिवीजन होके फिर two cells बनेंगे, two cells का फिर उसमें डिवीजन होके उससे four cells बनेंगे. वैसे ही डिवीजन होते जाता है और वहाँ के जो ऑर्गन्स है और जो सेल्स है, वो सेल्स नंबर वहाँ पे बढ़ जाता है. So in unicellular organism, the cell division means reproduction, which results in formation of the new individuals. जो यूनिसेलुलर से जिसमें सिंगल न्यूक्लियस रहता है, वैसे जो सेल्स है उसे हम यूनिसेलुलर सेल्स बोलते हैं. सो इन यूनिसेलुलर सेल्स दिस सेल डिविजन्स मतलब वहाँ का रिप्रोडक्शन है. जैसे सेल डिवीजन होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन बोलते हैं. और वहाँ पे जो एक सेल से दो नए सेल्स वहाँ फॉर्म हो जाते. बट इन केस ऑफ द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, द सेल डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स. दे फॉर्म द मिलियन नंबर्स ऑफ द सेल्स एंड they or they making the ऑर्गेनिजम्स. तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे क्या होता है कि सेल्स नंबर वहाँ पे सेल्स डिवाइड रीडिवाइड होते जाते हैं और वहाँ नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते. जैसे कि यदि हम प्लांट्स का एग्जांपल ले, प्लांट्स में पहले क्या रहता है, सीड्स रहता है. सीड्स में फिर वहाँ एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फिर लिम्यूल और रेडिकल जो शूट और रूट फॉर्म होते. तो वहाँ पे जो भी सेल्स है, सेल्स में क्या होते जाता है, डिवीजन रीडिवीजन होते जाता है. वहाँ का सेल नंबर बढ़ता है. जैसे सेल नंबर बढ़ता है जो उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट होता है. शूट की जो प्लूम्यूल रहता है, प्लूम्यूल का वहाँ का नंबर यदि बढ़ जाता है तो उससे फिर शूट फॉर्म होता है. शूट के बाद उसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स फॉर्म हो जाते. तो वैसे ही वहाँ का जो नंबर है, सेल नंबर इंक्रीज होते जाएगा. वहाँ उसी तरह वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिजम्स उससे फॉर्म होते जाते. देन दिस सेल डिवीजन, इट इज द मेन फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ द ग्रोथ. सेल डिवीजन से ही जो भी ग्रोथ है, ग्रोथ होती जाती है. Then the volume of cytoplasm and nucleus exceeds its limits. The cells divides and it follows the definite cell cycle. तो जहाँ पे जो यदि हम सिंगल सेल कंसिडर करेंगे, सिंगल सेल में
जो उसके अंदर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जब भी साइटोप्लाज्म की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी बढ़ती है, साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ने के बाद जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में जो सेल है, सेल में डिवीजन होना स्टार्ट होता है, और वहां पे जो सेल डिवीजन की जो साइकिल है, सेल डिवीजन साइकिल वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तो the period between these two cell cycles or two successive divisions is called as the generation time. एक एक सिंगल सेल से जब डबल सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, सिंगल सेल से डिवीजन होके टू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उसका जो टाइम है एक साइकिल कंप्लीट होने का, उसे बोलते हैं जनरेशन टाइम। देन what is the significance of this cell division? So these cell divisions, that means the multiplication in unicellular organism, while in multicellular organism it brings out the embryonic development and the growth. जो यूनिसेलुलर सेल्स में यदि सेल डिवाइड होते हैं तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन होके वहां पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। और यदि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यदि हम कंसिडर करेंगे तो वहां पे जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ होते जाती है, जैसे ही सेल डिवीजन होते जाएगा, सेल्स नंबर बढ़ेगा, वैसे ही वहां पे जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ होती जाएगी। देन also these cell divisions will play important role in the repair and maintenance of the body, also in reproduction of both asexually and sexually. So repair, that means if the say or cells will be damaged, यदि प्लांट्स के ऊपर यदि कोई प्लांट्स के यदि हम कोई भी ब्रांच कट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, और यदि नेचुरली यदि ब्रांच और या कोई भी पार्ट उसका कट हुआ तो वहां पे क्या होता है, अंदर से वहां पे सेल फिर से नए सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, और जो भी उसके ऊपर जो इंजुरीज हुई है, इंजुरीज को रिपेयर करने का काम भी ये सेल डिवीजन के थ्रू होता है। वैसे ही जो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी है और ऑल्सो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, वहां पे भी सेल डिवीजन हेल्प करता है। Also, these cell divisions, I have already told, these are similar in eukaryotic as well as in prokaryotic cells. Or that means in all organisms, the cell division process will be same. It is also similar in the animal's body. जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी वैसे ही सेल डिवीजन प्रोसेस होती है जैसे कि प्लांट्स में होती है। So this cell division is similar in all types of organisms. The next point is the cell cycle. So how these cell cycles will be completed? We have studied. Now you see the PPT. All of you seen this PPT on the cell cycle?
Okay, the next point, that is the cell cycle. So this cell cycle mostly divided into two phases, that is inter interphase and divisional phase. Also, the question may be asked, describe the G1, S, G2 and M phase of cells. So first of all, you have to little bit introduce about the cell. So any organism, there is the many numbers of organs. In organ, different type of tissues, and in tissues is made up by the different types of cells. So in cells, there is the protoplasm or cytoplasm, and at the center there is the nucleus. So in protoplasm, they have contained the organic matters or inorganic substances or water. So in protoplasm, it is the liquid medium. So in that, organic, inorganic, and some water substances are there. So this cell is fundamental unit of life, or also the basic structures of the life. So this cell is the protoplasmic mass bounded the membrane. So these cells when goes different phases in life. That means these parent cells, when this protoplasmic or cytoplasmic material will be increased, the divisional process will be takes place. So due to this division, two daughter cells are formed. These daughter cells will be then matured, and after maturation they become the parent cell. This parent cell again they can divide and they can form daughter cells. So it is the cycle. So this cell cycle, that means it is the cyclic changes in the parent cells to undergo the division and to form the daughter cell. And then the growth of daughter cells takes place, and again these daughter cells to form once again the parent cell. So the time requirement for completion of the one cell cycle is called as the generation time, and the generation differ from the cell to cell and organism to organism. That means जो cell cycle completion time है, these will be different in different organisms. So generally in case of the bacteria यदि हम देखेंगे तो bacteria they have very little life cycle, so only in 20 minutes they can completed their one cycle. Once एक cycle complete होने के लिए वहां पे उनको 20 minutes लगते. इन केस ऑफ द ईस्ट, यदि हम ईस्ट का एग्जांपल ले, तो ईस्ट के लिए यहाँ पे उनको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 50 मिनट्स लगते. वैसे ही जो अदर ऑर्गेनिजम्स है, यदि हम ओनियन का एग्जांपल लेंगे तो ओनियन का एग्जांपल है, ओनियन रूट में जो सेल साइकिल कंप्लीशन का टाइम है तो उसको 3 to 4 hours लगते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, दिस completion of the cell cycle timing is changeable. So next we will about the phases of the cell cycle. So in cell cycle there is the two main phases, interphase and divisional phase. So this interphase is again divided into three different phases, that is G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase, that means post mitotic phase. Second one, S phase, which is the synthesis phase. Then G2 phase is the pre-mitotic phase. So post mitotic phase, that means जो माइटोसिस प्रोसेस है, माइटोसिस प्रोसेस के जो पहले होती है, that is the G1 phase, और pre, that means G2 phase, it is after the mitosis phase. So in divisional phase, there is the two main phases, karyokinesis and cytokinesis. So karyokinesis, that means division of the nucleus. जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, जो कि हम माइटोसिस में एज अ माइटोसिस हम स्टडी करेंगे, और मेयोसिस भी देखेंगे कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैसे होता है. तो उसके 4 डिफरेंट स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. Then, after the completion of karyokinesis, there is the cytokinesis. Cytokinesis
दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। वहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो डिविजनल फेज में टू फेजेस आते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस दैट मीन्स साइटोप्लाज्म का यहाँ पे डिवीजन होता है। So it is the diagrammatic representation of the divisional phase. तो यहाँ पे आप देखते सकते हो G1 एंड G2 फेज के बीच में यहाँ पे डिविजनल फेज होता है। एक कंप्लीट लाइफ साइकिल है। कंप्लीट लाइफ साइकिल यहाँ पे आपको दिखाई है। तो डिविजनल फेज खत्म होने के बाद G1 फेज आती है, दैट इज पोस्ट माइटोटिक। डिविजनल फेज को ही हम माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं। तो डिविजनल फेज होने के बाद G1 फेज आती है। G1 फेज आने के उसके बाद में यस फेज दैट इज अ सिंथेसिस फेज रहती है। एंड थर्ड वन इज द G2 फेज दैट इज प्री माइटोटिक फेज। So in interphase there is this interphase. It is wrongly considered as a resting stage, but it is not a resting stage. In maximum cell cycle time will be covered in the interphase. तो फिगर में आप देख सकते हो इंटरफेज दैट मीन्स G1 यस एंड G2 फेज। तो जो मैक्सिमम सेल साइकिल टाइम है वो कैसे इंटरफेज में ही जाता है। डिविजनल फेज के लिए बहुत थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। So interphase is differentiated into three phases: G1 phase, S phase and G2 phase. So G1 phase में क्या होता है? When the G1 phase, in this G1 phase, the growth of daughter cells start with increasing the amount of cytoplasm, cell organelles, amino acids for histone proteins and nucleotides of the DNA. So actually, it is the हम इनिशियल स्टेज भी हम बोल सकते हैं कि डिविजनल के पहले क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का जो भी अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो G1 फेज में क्या होता है कि उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स लाइक अमाइनो एसिड्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, दे विल बी इंक्रीजिंग देयर अमाउंट। Then in the S phase, this S phase again it is the prolonged phase, and in that phase there is the amino acids will be joins to form the histone protein. Then nucleotides joins to form the DNA. In this synthesis phase, the synthesis of nuclear material will be takes place. तो जो nuclear material है, that is जो डीएनए कंटेंट रहता है सेल्स के अंदर वो वहां पे डबल होना स्टार्ट होता है। जैसे कि यदि 2n है, दिस 2n बिकम्स द 4n। जो भी वहां पे न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल वहां पे डबल हो जाता है। दैट इज द सिंथेसिस फेज। मीनिंग जो यस मीन्स सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब वहां पे क्या होता है, जो भी डीएनए है, डीएनए वहां पे डीएनए नंबर वहां पे बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। देन G2 phase, it is the growth of cell. In that G2 phase, there is the growth of cell takes place. That means further increase in cytoplasmic content and cell organelles will be takes place. जो भी सेल्स के अंदर जो भी कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, वो वहां पे इंक्रीज हो जाता है। एंड देन एक्चुअली द डिविजनल फेज। डिविजनल फेज में क्या होता है कि वहां पे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में मैंने बताया आपको कि जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। उसके फिर से 4 डिफरेंट स्टेजेस है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस होने के बाद जो भी सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई वहां पे फॉर्म हो जाते हैं। एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है। साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का डिवीजन होके वहां 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते। तो what is the actually significance of this cell cycle? So main reason is the multiplication. यहाँ पे जो भी सेल्स नंबर है, सेल नंबर वहां पे इंक्रीज हो जाता है।
जैसे ही सेल नंबर इंक्रीज हो जाता है वहां पे जो भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। वैसे ही जब भी यदि कोई टिश्यूज या ऑर्गेनिज्म इंजर्ड होता है तो उसको रिपेयर करने का काम भी ये थ्रू सेल डिवीजन हो जाता है। ऑल्सो होल लाइफ साइकिल विल बी इनटू ऑर्डर्स ऑफ द इवेंट्स, जो भी है ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ या एनिमल्स की हो या एनी ऑर्गेनिज्म, जो ग्रोथ है ग्रोथ कंटिन्यूस करने का काम है थ्रू सेल डिवीजन और सेल साइकिल होता है। ऑल्सो in case of the any disorders in this event, some abnormal cells growth will be takes place in for example जो कैंसर है, कैंसर में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो abnormal cells वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो this is also due to the this cell division or the cell cycle. So this is all about the introductory part of the cell divisions and cell cycles. In next lecture, we have discussed about the actually the karyokinesis process, and in that there is the mitosis and meiosis. So briefly we have discussed in next videos.